Yeah. So we have already studied the outlining of the wastewater treatment process. Now today we will be dealing with the analysis and design of all the components which we have studied in the wastewater treatment process. All those components like uh, clariflocculator, then sedimentation tank, then grit removal tank, all those things you have to analyze, or at least we have to consider that how the installation of those components is done, like screen. You cannot design anything in screen. Perforations are already there, everything is already there. What you do in designing of screen is you provide the particular angle, plus you provide the what cleaning mechanism on the screens itself. So that is just an example. One by one we'll be considering all the components, all the devices which are used in wastewater treatment. So the very first device that we have discussed already, that is the first procedure, that is screening. So we all know that screening is done for what? For segregating the same floating materials, or you can say the suspended impurities. Okay, but over here in screening, okay, unlike the fresh water or raw water, you can say screening is a bit difficult in wastewater. Why? Because the suspended impurities, all the suspended impurities present in this particular wastewater, they are too much. Okay, plus the size of the suspended impurities is also bigger as compared to the raw water. Okay, so that we have to deal with. See, if enormous amount of the suspended impurities plus large impurities will come on the screen at once, then what will happen? The clogging will take place, and once the screen is clogged due to any one rag or any what you can say, one floating log or something like that. So what will happen? All the minor impurities or small impurities also, they will be clogging the entire screen. Okay, so coming to the screen, these screens are of two can be classified into two categories: the core screen and the fine screen. So this core screen, they are also known as racks, or and also the spacing between these particular screens is about 50 mm. So this core screen is basically for the large impurities. Then comes your medium screen. The spacing between these medium screen is ranges between 60 to 40 mm. These are perforations, or you can say the spacing between the screen. If they are grills, then it is considered to be spacing. Then if they are nets, or you can say different screens with circular perforation, then these can be the size of or dia of the perforation. So these screens, they have to be generally kept at about how much, 30 to 60-degree inclination to the direction of flow. Now we'll see a diagram how these screens are placed. See, the first diagram, this is your fixed bar type screen. Okay, then apart from coarse and medium screen, fine screens are also there. Fine screen plays a very vital role in screening of the impurities. Why? Because all the fine impurities that are supposed to be going into the grit removal tank also, they will be, some of them will be improved here only, or some of them will be filtered here only. Okay, just a minute. Yeah. So these fine screens, they will be having a perforations of about 1.5 mm to 3 mm in size. Okay. Now over here in the diagram, you can see that inclination of the screen. The screen is provided. See the first diagram, figure 5.6. Over here you can see what, a bar type or fixed bar type core screen is provided. Okay. So second one is here this core screen. So how this is provided? It is provided at an inclination to the direction of flow of water, that is 30 to 60 degrees. Now this second diagram shows a cleaning the same disc type fine screen. Okay. Now this disc type fine screen, why it is known as disc type? Because why it is called disc type? Because this cleaning mechanism, okay, this there is a scraper provided for cleaning the screen, and a perforated cone brush is always provided with this particular thing. So this is what, this is an automated mechanism. So what will happen? Direction of flow is in this particular direction, so the impurities will be infiltrated on the screen itself, and with the help of this auto cleaning mechanism, this cleaning scraper and this perforated brush.
Okay, what will happen? The entire impurities will be removed very easily. Okay. और सर जो ऊपर वाला है वो फिक्स बार टाइप वाला, उसको मैन्युअली साफ करना पड़ता है जब And क्लॉग हो जाता है वो, that has to be cleaned manually. See, क्योंकि अल्टीमेटली एक टाइम पे क्लॉग तो होगा. yes, but the point is this thing. The point is that over here, ये जो तुम्हारा fixed bar type screen होती है, the screen is actually not moving. यहाँ पर क्या है? इस कंडीशन में तुम्हारा स्क्रीन फिक्स्ड है, लेकिन स्क्रैपर ऑन द स्क्रीन इज मूविंग. ठीक है. फर्स्ट वाले में क्या होता है? फर्स्ट वाले में मोस्टली कोर स्क्रीन जो तुम्हारी है वो यूज होती है. ओके, कोर्स या मीडियम स्क्रीन के लिए फिक्स टाइप तुम यूज कर सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फाइन स्क्रीन ऑलवेज ऑटो क्लीनिंग मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड. क्यों? क्योंकि फाइन स्क्रीन की क्लीनिंग क्लॉगिंग बहुत जल्दी होती है. कोर स्क्रीन की क्लॉगिंग क्या होता है? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं होती है. ठीक, कोर स्क्रीन तब क्लॉग होती है जब कोई बहुत ही ज़्यादा यस. what do you say, pieces of cloths or polythene will be there. So those things like those will be yeah, dead remains of plants, leaves. Okay, those are the impurities which will be clogging the screen. But in that case, you have to clean the screen this thing manually. Okay. See, even if automated system is provided in the first fixed type bar screen, then also the cleaning is not frequent. What I'm trying to convey in the second one, this type fine screen, the cleaning is always going on. There's a continuous cleaning mechanism provided. Okay. Then this cleaning frequency and head loss through the screen is one thing you should be concerned about. Okay, so uh, see, the point to be noted is that generally not more than half the screen clogging is allowed. क्लॉगिंग मीन्स अब तक जो तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि क्लॉगिंग मतलब पूरी स्क्रीन क्लॉग हो गई और पानी जाना रुक गया. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, वेन एवर वी गो फॉर दिस टेक्निकल डिजाइन ऑफ दिस स्क्रीन्स एंड ऑल, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग इट लाइक सीवर स्क्रीन. ओके, हम लोग जो स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं दैट शुड बी इन सच अ मैनर. सी, ऑलवेज यू आर ऑलरेडी हैविंग ए आइडिया ऑफ द डिस्चार्ज. ओके, जो भी सीवरेज एस्टिमेटेड सीवरेज डिस्चार्ज है या फिर ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जितना भी डिस्चार्ज तुम्हें ट्रीट करना है, वो आइडिया तुम्हें ऑलरेडी होता है. ठीक, आइडिया नहीं है तो उसको पहले कंप्यूट किया जाता है, उसी के बेसिस पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं. तो व्हाट आर मोटिव शुड बी, our motive should be such that the screens, whatever screens we are providing, not more than half of the screen should be clogged. Okay, under worst circumstances what will happen, बुरे से बुरी कंडीशन में भी आधी स्क्रीन आपकी काम करती रहनी चाहिए, सिर्फ आधी स्क्रीन की क्लॉगिंग अलाउड है. ओके, एंड द मोमेंट दैट हाफ स्क्रीन क्लॉगिंग इज अचीव, what should be done, the cleaning operation should be carried out. Okay, and if even if automated cleaning is provided, then also it should be ensured that not more than half the screen should be clogged. Okay, then if we have to calculate head loss, there is a formula for head loss through the screen, that is 0.0729 into capital V square minus small v square, where capital V is the velocity through the screen and small v is the velocity above the screen. Okay, velocity of what? Velocity of the flow of wastewater. सर अबव द स्क्रीन मतलब जहाँ पे Above the screen मतलब क्लॉगिंग नहीं हो पहले. रखी. अच्छा. See, if this particular inclination is your screen, ठीक है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री whatsoever it is, तो क्या होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. ठीक, तो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक, ये सेक्शन 1, ये जो स्क्रीन है तुम्हारा, ये डिवाइड कर रहा है ना. अबव द स्क्रीन मीन्स इससे पहले, एंड थ्रू द स्क्रीन मीन्स जब इस स्क्रीन से पास हो रही है उस टाइम पे इंस्टेंट वेलोसिटी while passing through the screen, that is your small v. हेड लॉस कहाँ कैलकुलेट ओके करोगे? सर. हेड लॉस यही तो होगा ना, इससे पहले पानी हाँ. फ्लो कर रहा है. इंटरप्शन का है, इंटरप्शन इज प्रोवाइडेड थ्रू द स्क्रीन. ओके, so if we are providing the interruption or you can say hindrance to the screen, तो हेड लॉस कहाँ होगा? हेड लॉस भी स्क्रीन पे ही होगा. नेक्स्ट was in that particular operation, next was what? Grit chambers. ठीक है, ग्रिट चैम्बर्स का काम क्या था? ग्रिट चैम्बर्स का काम था ग्रिट रिमूव करना. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रिट?
What is grit? सर जो बेस पे रह जाता है सैंड पार्टिकल्स Yes, the small वगैरह। particle, ठीक है, जिनका नॉमिनल डाया कितना होता है 0.15 से 0.2 mm तक, ठीक है, या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। दीज आर बेसिकली व्हाट इनऑर्गेनिक डर्ट। ग्रेट क्या होता है? इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज सैंड, ग्रेवल और ब्रोकन ग्लासेस और एनी अदर मटेरियल्स, ओके, एनी इसी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, वेस्ट वाटर, ठीक। तो वेस्ट वाटर के केस में जो ग्रेट होगा तुम्हारा वो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इनऑर्गेनिक, इट कैन बी ऑर्गेनिक एज वेल, ठीक। then it can be putrescible matter or it may be non-putrescible matter, okay, anything, okay। So this grit chamber or grit channels, there are two things, grit chambers और detritus tank, ये दोनों अटैच चीज़ें होती हैं। I told you in the previous lecture also, grit chamber क्या होता है? ये रिमूवल करने के लिए, ग्रिट रिमूव करने के लिए जो हम चैम्बर प्रोवाइड करते हैं या फिर चैनल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जब उसी ग्रिट चैनल्स को हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर टैंक के फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज व्हाट, डेट्रेटस टैंक, ठीक है। देन इट कैन बी दिस डेट्रेटस टैंक, इट कैन बी ऑफ सर्कुलर shape also, ठीक। In the previous lecture when I introduced you to the grid chambers and all, तो तुम्हें एक डायग्राम याद होगा जिसमें वोर्टेक्स टाइप ग्रिड चैम्बर था, ठीक है, जिसमें हम लोग वोर्टेक्स जनरेट करके और ग्रिड को रिमूव कर रहे थे एट द बॉटम, okay। So this grid chamber has certain specification, okay, whenever either it is grid chambers or it is grid channel or it is detritus tank, all of these they will be having certain what, certain parameters that you have to keep in mind while designing, ठीक है। अब अगर चैम्बर्स की बात करो या डेट्रिटस टैंक की बात करो, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स, सी फॉरगेट अबाउट द डिजाइन पार्ट एंड स्टेप्स फॉर डिजाइन एंड ऑल, just consider what should be the parameter you will be going to design if you want to design, then पहली चीज़ तो क्या है, तुम्हारा पर्पस फुलफिल होना चाहिए, ठीक। कोई भी चीज़ तुम डिज़ाइन कर रहे हो या कोई भी फैसिलिटी तुम जनरेट कर रहे हो या बना रहे हो, तो व्हाट इज़ योर सोल मोटिव? योर मोटिव इज़ टू व्हाट, your motive is to ensure that the facility you have designed should work for its intended purpose, ठीक है। अब इसका intended purpose क्या है? What is the motive of grit chamber or detritus tank? To remove the grit, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक ऑल स्मॉल पार्टिकल्स पार्टिकल्स हैं को मूव ये करना। सब रिमूव करना है। तो उसके लिए तुम्हें कौन से पैरामीटर्स तुम्हें नोटिस करने चाहिए या कंसिडर करने चाहिए वाइल डिजाइनिंग? यू पीपल टेल मी। वेलोसिटी, Yes. Now, स्लोप, now comes the thing, your previous knowledge। जो सबसे पहले ही तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जब तुम डिजाइन करते थे तो क्या होता था तुम्हारा? सेटलिंग वेलोसिटी, द फ्लो वेलोसिटी एंड सेटलिंग वेलोसिटी, these were the main parameters which were designed while considering the sedimentation। तो यहाँ पर भी हम क्या करा रहे हैं? काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन ही करा रहे हैं, ठीक। यू हैव टू इंश्योर, लेकिन यहाँ पे हमारा मोटिव ये नहीं है कि पूरा का पूरा मैक्सिमम सेडिमेंटेशन होना चाहिए। हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे? कि सिर्फ जो नॉमिनल डाया के पार्टिकल्स हैं जिनको हम ग्रिट की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक, सच एज सैंड एंड ग्रेवल एंड ऑल, तो हमें सिर्फ वो पार्टिकल्स रिमूव कराने हैं, ओके। क्या मोटिव है हमारा? सिर्फ ग्रिट को रिमूव कराना है। तो इन ऑर्डर टू रिमूव द ग्रिट वी नो द नॉमिनल साइज और नॉमिनल डाया ऑफ द पार्टिकल्स, ग्रिट पार्टिकल्स। तो हम क्या कर सकते हैं? उस नॉमिनल डाया के हिसाब से हम वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी डेजिग्नेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट वी हैव टू इंश्योर दैट द फ्लो वेलोसिटी शुड बी देयर। सेकेंड चीज जो हम लोगों को इंश्योर करना है वो क्या, कि जो भी डिस्चार्ज है हमारा, अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज द शेप ऑफ द चैनल और द शेप ऑफ द टैंक शुड बी डेजिग्नेटेड। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। Okay. Now just look at the last statement. Generally, grits channels are designed to remove all particles of higher specific gravity of 2.65 or so, with a nominal dia of 0.2 mm. ठीक है, तो always keep in mind whenever this grit removal design will be taking place, okay, you have to use the nominal dia 0.2 mm and settling velocity of about 21 millimeter per second at 10 degrees. Okay, this ranges up to 0.28 meter per second.
Okay, you can इसी को convert कर लोगे तो that is your 0.28 point, yes, 0.28 around. Okay, so although grid removal channels are designed to remove particles above 0.15 mm size having settling velocity of about 15 mm per second. Okay, so minimum size जो हमारा remove हमें कराना है that is 0.15 and जो nominal size हम consider करते हैं that is your 0.2 mm for grid removal. Okay, so these are the specification. You have already studied that grid channels can be of two types. या तो horizontal flow type होगा जिसमें aeration नहीं होता, ठीक है, या फिर it can be aerated type जिसमें तुम क्या करोगे, तुम you will be introducing what, aeration into it. And what is the point of introducing aeration into it? These particles, they will be what, they will be set into motion, and what kind of settling will take place then? चार तरह की सेटलिंग पढ़ी है तुम लोगों ने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. What is type 1? Discrete settling. Then what is the second one? Discrete settling, flocculated, Discrete, then zone or hindered flocculated. settling. Yes, then flocculent settling, and last one is your forced settling. Okay, forced flow settling, or sorry, Yes. compressible settling it is known as. Compression settling जैसे बोलते हैं. तो over here what will happen? This compression settling will take place. Okay, why? Because once set into motion, the heavier particles will compress the lighter particles and they will cause it to settle down. Okay, so aerated type grid channels are also beneficial for us. Then these last 3 points you have to keep in mind. Okay, a critical this scurrying velocity, critical scurrying velocity, this is given by modified shield formula, that is vh is equal to 3 to 4.5. This is up to you, you can take any value between 3 to 4.5, that is 3 to 4.5 into square root of gd into g minus 1. ये फॉर्मूला कहाँ से आया? दिस इज योर मॉडिफाइड शील्ड फार्मूला. एंड इफ यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी, ओके, नाउ दिस इज वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट. अगर हमें सेटलिंग वेलोसिटी निकालनी होती है तो सेटिंग वेलोसिटी किससे निकालोगे तुम? यू विल यूज द विच लॉ विल बी फॉलोड ऑन अ पार्टिकल? ये तो मैंने खुद पढ़ाया हुआ तुम लोगों को हाइड्रोलिक मशीन में. कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग CD याद है? If a particle is settling down, then what will be acting? Coefficient of drag will be acting on that particle. And if coefficient of drag is acting on that particle and that particle is set in motion in the direction of flow of water, then which law should be applicable? Stokes law. याद है Stokes law? None of you remember No, Stokes sir. law? Very good. No, sir. Stokes law you have studied in fluid mechanics also, you have studied in hydraulics also, and then I guess in the first unit जब settling velocity पढ़ रहे थे तब भी ये formula पढ़ा हुआ तुम लोगों ने. चलो, leave it. Okay. So for grid particles of nominal dia, that is 0.2 mm, what is there? The critical scur velocity, it should be what? It should be lying between 0.11 to 0.25 meter per second. This you have to keep in mind while designing the velocity, while designing. ठीक है, तो जब भी grid chamber या grid channel design करोगे, you have to keep this in mind that for grid particles of 0.2 mm, the critical scur velocity should be how much? It should be between 0.11 to 0.25 मीटर पर सेकेंड. तो हम लोग हमेशा हायर साइड में ही प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, वी ऑलवेज प्रोवाइड एट द towards the higher side. This can be up to, you know, it can range up to 0.27, 0.28. That doesn't makes any difference. Okay, because practically whenever we provide this flow velocity, you know, it is about it always lies between around 0.8 or sorry 0.28 and 0.27. ठीक है, हमेशा इसके आसपास ही होते हैं. See over, yeah, in the notes also it is written over here that in practice of flow velocity of about 0.2 to 0.3 meter per second is adopted for design of grid basins. Okay. Similarly, specific gravity of grid, it is also usually a range. Okay.
range for 0.15 mm dia particles it is different, then for 0.2 mm dia particles it is different, but we take on the higher side, that is 2.65 if not given. But if it is given, then it is okay, you have to use the value in the question. So we'll start with a question. Okay, now there is this, you have to design a rectangular grid chamber. See this, in this question, design a rectangular grid chamber for a flow of 40 mld. What is mld? Sachin Singh, what is mld? Sachin Singh is there with us. I'll mark absent if I don't hear any response from you people. Yes, sir. Million liters day. Okay. Okay, and specific gravity is given to you over here, that is 2.65. Also the size of the grid is given to you. Okay, so this is very good. If the size of the grid is also given to you, then you all know that the settling velocity will be how much? It should be between 0.25 to 0.3, around 0.27 or 0.28. Okay, then you have to 0.11 to 0.25. you have to find out what the settling velocity of 0.2 mm particles and what, and critical horizontal velocity of flow. Okay, and also the size of the grid chamber. So size of the grid chamber is not a big deal, you already know the estimated discharge. With this estimated discharge you can calculate this directly. Then what is the role of this kinematic viscosity of liquid which is provided to you? Yes, what is the role of this kinematic viscosity provided to you? This will be used in the calculation of settling velocity by Stokes equation. Stokes law जो पढ़ा था, what was the Stokes equation? If you have to calculate velocity, what is velocity? G into G minus 1 upon yeah, GD square upon 18 into G minus 1 upon what? Nu. ये formula था ना? None of you remember Stokes law. How is it No, possible? sir. How is it possible that none of you remember Stokes law? सेटलिंग वेलोसिटी की इक्वेशन तो याद होगी, वो भी नहीं याद. Then how you will solve this numerical? Sir will be solving, huh? See, see in the solution. Now you are able to see the equation, Yes, sir. all of you. अभी याद आया स्टोक्स लॉ क्या होता है? This SS is your specific gravity. So this, in your books it will be written as capital G. So what is Stokes equation? GD square upon 18 mu into G minus 1. इसी को दूसरे फॉर्म में डाया को दूसरे साइड में लिख दोगे नोटेशन, तो ये इक्वेशन तुम स्टोक्स लॉ तुम्हारे जो बुक्स में लिखा होता है सेम वैसे समझ में आ जाएगा. It is all about, you know, converting one equation to another. You all have studied hydraulics and hydraulic machines also. Over there what we used to do, we used to derive one equation. उस एक इक्वेशन से हम लोग रिफॉर्म कर करके एटलीस्ट 3 या 4 तरह के इक्वेशंस बना लेते थे, एंड ऑल दोज इक्वेशंस वर यूज्ड at different situations, or you can say different position. Same is over here also. Okay, so how this has to be done? You have to first assume that the flow in the grid chamber is laminar flow. Okay, since you have to, क्यों laminar flow क्यों माना तुमने? Why did you assume that that laminar flow is there? Any idea why you people have considered laminar flow? स्टोक्स लॉ में assumptions थी ना कि हमें क्या कहते हैं लेमिनार फ्लो कंसीडर करना पड़ेगा.
Okay, that is ये one सिर्फ reason. laminar के लिए है. Yes, that is one reason, Turbulence. and the other reason is what? The other reason is because grid chamber Turbulence में, में सारे सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होएगी. यस, जब तुम ग्रिड चैम्बर में अगर टर्बुलेंस रहेगा, ठीक है, लैमिनार फ्लो जब तक नहीं कराओगे तब तक तुम सेटलमेंट नहीं करा सकते हो. ठीक है, अगर तुम टर्बुलेंट फ्लो दे दोगे ग्रिड चैम्बर में तो उसका क्या यूज है. और अगर टर्बुलेंट फ्लो दे रहे हो तो उस टाइम पे फिर वोर्टेक्स फ्लो देना पड़ेगा. रिमेंबर दैट वोर्टेक्स टाइप डेट्रिटस टैंक. ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. Yes. So what we have done is we have assumed that the flow in the grid chamber is laminar in nature. Then what will happen? We can calculate the settling velocity with the help of Stokes equation directly. So all the parameters are given to you. You just have to keep in mind the units. Okay, all you have to keep in mind is units. See, kinematic viscosity is in centimeter square per second. Then this settling velocity of the particle size is 0.2 mm. So this is in millimeter, this is in centimeter. All that is all of you might be making this mistake in conversion only. Okay, so always it is better to keep writing the units and converting the units by itself over there only. Okay, so once you'll calculate, you'll get the velocity 0.36 meter per second. Then with this velocity you will do what? You will check the Reynolds number. You will check the Reynolds number, that at this velocity the Reynolds number condition should be satisfied. And satisfied for what? For grid for this flow to be laminar. But what happens if your Reynolds number comes out to be, in this case it comes out to be 7.2. Okay, and once it comes out to be 7.2, what will happen? It means that 7.2 is what? रेनॉल्ड्स नंबर की रेंज में अगर 7.2 आ रहा है तो क्या मतलब है इसका? इट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन, दिस शुड बी 10 power 3. देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर. ओके, इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1000. तो इसका मतलब क्या हुआ? द फ्लो इज व्हाट काइंड ऑफ फ्लो इज दिस? Transitional. ट्रांजिशनल फ्लो इज दिस. ठीक है, तो once you know that transitional flow is there, so you can calculate coefficient of drag. कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग का फॉर्मूला ट्रांजिशनल फ्लो के लिए क्या होता है? See, the flow is turbulent or it is this thing laminar, then directly you can use CD equal to 24 upon RE. Okay, but in this case if the flow is transitional, then you all have studied this. Why people are not responding? This is the formula. What is the formula? 24 upon RE plus 3 by square root of RE plus 0.34. इसी को कन्वर्टेड फॉर्म में तुम लोगों ने डिराइव किया था. इट कम्स आउट टू बी 0.18 समथिंग आई गेस. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है, इसी को तुम कन्वर्ट कर लोगे तो क्या आ जाएगा? इसी को सिंप्लीफाई करके तुम सीधा फ्रैक्शनल फॉर्म में ले सकते हो. बट ओवर हियर इट इज रिटन लाइक दिस 24 RE. क्यों लिखा हुआ है अलग से तुम्हें दिखाने के लिए? ठीक, so this coefficient sir. of drag will be coming out 4.8. Now with this particular coefficient of drag, okay, you will use what? You will use the general formula for calculation of settling velocity. अब ये फॉर्मूला तो याद आ रहा होगा तुम लोगों को, जो इनिशियल सीवर में हम लोग जो सेटलिंग वेलोसिटी, मिनिमम सेटलिंग वेलोसिटी हम लोग दे रहे थे. हाँ सर, हाँ सर. Remember 4/3 what? 4/3 into g into g minus 1 into d upon cd. CD is coefficient of drag, G is 9.8 and this SS is your capital G actually. Given. Okay, that is 2.65. So with this you will be getting what? You will be getting the actual velocity. Okay, now that Settling you got, velocity. yes, now that you got settling velocity 0.03 meter per second, तो इसको तुम किससे कराओगे? Permissible values से match. You know that for 0.2 mm particles to settle down in grid chamber, you have to provide a velocity which is not greater than how much? It should not be greater than around 0.27, 0.28. Okay, 0.25. it is taken as 0.25, but practically it can range up to 0.27 and 0.28 also. Okay, so what you will do? You will perform the second iteration. Now why you will perform the second iteration? You will perform the second iteration because you have to provide the what? You have to
provide the settling velocity in such a way that it should be non-scurrying and it should be what? It should be maintaining the flow. Okay. So for that you have to do the you have to keep doing the iteration. कब तक करना है iteration? Till the time you achieve a velocity जो तुम almost similar velocity हो. ठीक, for example देखो, yeah, now second time जब तुम रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करोगे you will be using this velocity जो तुमने अचीव किया. ठीक, फिर उससे दोबारा तुमने velocity कैलकुलेट की, that comes out to be 0.028 मीटर पर सेकेंड. ओके, फिर थर्ड आइट्रेशन तुमने किया तो अगेन इट कम्स आउट टू बी 0.027 मीटर पर सेकेंड. सो सी द डिफरेंस, इट इज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 0.027 and 0.028. they are almost nearly equal. So once this value comes out to be nearly equal, then it is fixed. ठीक है, so you can value तुमने यही अचीव कर ली, this velocity is this only. तुम 0.028 भी प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है, लेकिन थर्ड आइट्रेशन हम क्यों करते हैं? फॉर कंफर्मेशन. नॉट थर्ड, हम लोग तब तक आइट्रेशन करते हैं जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता, वैल्यूज ऑलमोस्ट मैच नहीं कर जाती. ठीक है, देन you have calculated settling velocity for the particle. Now once you know the settling velocity, तो critical horizontal velocity or you can say curve velocity can be calculated. कहाँ ये किस पे था जो अभी तुम लोगों ने पढ़ा था? That is by modified shield formula. Okay, so on the maximum side if you will provide, it is 4.5 under root of gd into g minus 1. अगर minimum side में provide करोगे तो it will be instead of this 4.5 you can take 3. Okay, so we always preferably provide on the higher side. Now comes the last thing, that is very the most simple part, that is the Area. geometry. Yeah, the Size. geometry of designing the geometry of the grid chamber. So how you will do it? You know the quantity of flow. Discharge तुम्हें पता है. ठीक है, discharge is 40 mld. Convert it into meter cube per second. Okay, then once you know the discharge, you know the velocity. area तुम calculate कर सकते हो. ठीक, q is equal to v है, area calculate कर लो. Okay, इसमें velocity कौन सी use होगी लेकिन? Which velocity will be used over here? सर जो हम पहले दी हुई थी. The flow velocity. पहले दी हुई थी नहीं, जो flow velocity तुमने निकाली है. ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम ज्योमेट्री डिजाइन कर रहे हो. अभी ज्योमेट्री अगर डिजाइन कर रहे हो तो फ्लो वेलोसिटी तुम के अकॉर्डिंग डिजाइन करोगे, नॉट द सेटलिंग वेलोसिटी. ठीक है, यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया. एरिया का मतलब क्या है? तुम टॉप सरफेस, ठीक है, टॉप व्यू से देखो. इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस रेक्टेंगुलर दिस थिंग, तो टॉप सरफेस से देखो उस चीज को. ठीक है, तो एरिया जब डिजाइन कर रहे हो, टॉप सरफेस कंसिडर कर रहे हो, तो सेटलिंग वेलोसिटी नहीं करोगे. अगर तुम उसकी क्या डिजाइन कर रहे होते, डेप्थ डिजाइन करते टाइम तुम सेटलिंग वेलोसिटी देखते हो. ठीक है, जैसे सेडिमेंटेशन टैंक में करते थे, रिमेंबर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो और सेटलिंग वेलोसिटी दो होती हैं. तो जब डेप्थ डिजाइन करते हैं तब हम लोग ये सेटलिंग वेलोसिटी कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो दिस एरिया इज कैलकुलेटेड एज 1.78. नाउ this area and depth ratio should be taken. Okay, so d by b ratio consider करके and rectangular, simple rectangular basin you have to design it. Okay, once you design the say depth and breadth of the rectangular channel, then what you can do, you can find out the detention time also. Detention time कैसे निकलेगा? Depth of the basin divided by settling velocity. ठीक है, see if this is your rectangular basin, ठीक, ये तुम्हारा कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ठीक, और ये तुम्हारा क्या हो गया? सेटलिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई. तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिजाइन करते टाइम ये डायरेक्शन कंसिडर करनी है और सेटलिंग करते टाइम ये. तो डिटेंशन टाइम कैसे निकालोगे तुम? सी ऑलवेज कीप इन माइंड दिस पार्टिकल हैज हाउ मच ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन. ये पार्टिकल मे बी ये पाथ ट्रेस करे, हो सकता है हैवियर पार्टिकल है तो ये पाथ ट्रेस कर जाए. अगर बहुत ज़्यादा लाइटर पार्टिकल है तो मैक्सिमम इट शुड बी what going over at some place over here and then it should settle down. Okay, this is the criteria or phenomena which is
or you can say technique which is considered while designing the settling velocity and detention time. Okay, so then after this you can go for the design of similarly length of the tank and also the entire dimension. Okay, Yes, sir. yeah, so this is how this design of grid chambers take place. Is it clear to everyone? Is there any doubt? No, sir. Then we'll end the lecture today here only. Okay, practice more questions. You will find less questions on these, but still, whatever questions you find out on design of detritus tank. See, in this particular course, you will be mostly concerned about design of the trickling filters and all those facilities. So detritus tanks and all, yeah, either Imhoff tank design is considered mostly, or trickling filter design is carried out. Okay. So we'll end it over here. In the next lecture, we'll continue with the sedimentation tank design.